श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल आपको समझ में आए क्या बात? The knowledge is, one is understanding, but the difficulty is how to make others understand. That is more important. Now we say here Vijnanavadi or Bhāṣyarthavadi. These two Vadis are there. Who are actually Vijnanavadi and Bhāṣyarthavadi? See, Śloka is Prajñaptehe Sanimitatvam Ishyate, Prajñapte, 44 Śloka. Prajñapte Sanimitatvam Anyatha Dvayanashatah Samkleshasya Upalabdhescha Paratantrastita Mata. Now see here, Vijnanavadi and Bhāṣyarthavadi. These two are Buddhist philosophy. So this Buddhist, one is Bhāṣyarthavadi are called Hinayana, and other is Vijnanavadi, Mahayana. These two are there. Now, when these two people they argue, when they argue together, both condemn each other, then ultimately ajati will be established. So now the arguments of Hinayana, that is Bhāṣyarthavadi, Bhāṣyarthavadi, those who say the outside objects, the objects of the world outside are real, they have to exist. Right? Vijnanavadi says knowledge is very important, illuminating factor. In dono mein some problems are there. First we have to understand that, then we can go through Bhāṣya. Bhāṣya I say we can study. So, abhi now, till now, Astika Darshanas were seen. Astika Darshana. So many Astika Darshanas we saw and we condemned them. Like Ishvara, Sankhya, Yoga, so many things. Now, this is what is happening now. They say, Bhāṣyarthavadis, they say, dekhiye, you have condemned Karya Karana Sambandha. Is it not? So far. Karya Karana Sambandha, but the Karya Karana cause and effect relationship which was condemned by you, we are not talking about that cause and effect relationship, but we speak about something else,
some other cause and effect relationship where you cannot condemn. The cause and effect relationship, what you spoke, was regarding to or pertaining to Utpatti, production, creation. That we also don't accept. But what we don't, our cause and effect relationship is different. That you cannot deny it. We have our logic. Now, what is the cause and effect relationship now? See, we accept cause and effect relationship in Jnapti, knowledge mein. What is that now? Not in Utpatti, what you mentioned. What we say, dekhiye, yesterday we saw, Bhāṣya says that unless there is Ghata Jnana cannot take place. Unless there is Pata means cloth, Ghata means pot. Pata is there outside, then only Pata Jnana takes place. So, in this way, what is happening? Ghata is the cause and the Ghata Jnanam is Karya. If the pot doesn't exist, the knowledge of pot can never take place. If the cloth doesn't exist, knowledge of the cloth doesn't take place. So here, first of all, we accept that there is something called pot, then only the pot knowledge is possible. So here pot has become the cause and the effect is knowledge of the pot. So there is a relationship between them. When the pot is there, the knowledge of pot takes place. Now this Karya Karana Sambandha, what we are speaking about, this you must accept. Bhāgyarthavadi says. Now why? Because if you don't accept that the objects are really existing outside, so in the knowledge of the pot, what is nimitta? Pot. In the knowledge of the cloth, what is nimitta? Cloth. So they say the world, outside world is really existing, then only the knowledge can take place. Number one. इसका हम युक्ति है इनके पास. He presents two logic. Number one. So, if that is not there, how will knowledge take place? Knowledge cannot take place. That means, perception of Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. The knowledge of color is different from knowledge of smell. Knowledge of smell is different from knowledge of touch. Thus, each knowledge is different. How can there be difference in knowledge if there are no objects, different objects in the world outside? So there is a knowledge taking place in variety of ways. Therefore, here nimitta is the objects, and that's why knowledge of the objects taking place. So what your Karya Karana Sambandha of production, something caused in Utpatti, in creation, that I also don't accept that logic and all. But how can you deny the knowledge itself? So, this is our proposal, first one. Moreover, the Acharya also mentions, of course, same Bhāṣya only we are talking without reading the Bhāṣya. Another point is, Sanklesha, meaning Dukkham,
or sukham. Pain, you take pain. If the knowledge of the objects and the objects are not really, not real outside, when we experience such knowledge, why would pain take place or sukham take place if the knowledge, the objects are not really present outside? You say knowledge is, objects are unreal. If they are really not there at all, not only the knowledge takes place, knowledge of the objects, not only the objects are the nimitta in gaining the knowledge of the particular object. पटज्ञान में पट निमित्त बन गया, घट ज्ञान में घट निमित्त बन गया. Not only that, in the outer world we experience many things, and sukha dukkha anubhuti also taking place. But can you reject pain? Pain is real. If the objects are unreal, why the experience is real? Not possible. Therefore, if the objects are not differentiated, some objects give us pain, some give the joy. So how can you say this object is joy, gives me joy, this object gives me pain, this object theek hai? Vaichitriya. If vichitra or differences are not there, how can this kind of talk can come? How can different experiences take place if there are no difference in objects? Therefore, you have to accept, because of Vaichitrata, variety is there in the objects, plus experiences are real. Therefore, you must accept the outer world is real. So, it is because of the objects only knowledge is taking place. How can you condemn them, saying that nothing is born, nothing is there? So, they are Bhāṣyārthavādis. So, what is it they say? They say, ज्ञान हो या ना हो, वस्तु स्वतंत्र रूप में उसका अस्तित्व है. आपके पास कोई ज्ञान हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं है. बट ज्ञान हुआ तो सुख दुख का अनुभव होता है. If the objects are unreal, how can sukha dukkha take place? So objects are independent of knowledge. This is how their logic is. यहाँ तक समझ में आया? What is jnanam? Jnanam is, that's the prakasha rupakam. It is compared with light. Yesterday we saw. Meaning, whatever the outer objects are, knowledge illumines. When the objects are illumined by knowledge, the knowledge of the object takes place. In the Shuddha Jnana, there is no difference. In the pure light, there is no difference. You can't even see pure light. And the pure light falls upon an object, that light takes the shape of the object, meaning that light illumines the object and therefore you see that.
So there is the object, then only the light is throwing there, the object is there, then only the object, that light reflected from that object onto the retina, then only I can see. Therefore, in the knowledge of X, that X is the nimitta. This is what they are arguing. So they say, there is no difference like in knowledge as such, like crystal example is given in the Bhāṣya. Spatika. Spatika is Shuddha Spatika. But whatever color you bring near to it, it turns into that color. Similarly is the knowledge. But objects are real, then only the knowledge is taking place. The objects are really unreal, I mean, they doesn't exist. Meaning there is no satta, then anubhav cannot become real. This is how he argues. So knowledge is pure, but because of the objects of the world outside only, the knowledge is taking place. Knowledge of the particular object. Therefore, these two logics are given. That is, one is Sanklesha, other is Nimitta. One is Nimitta. वस्तु ही नहीं है तो वस्तु का ज्ञान नहीं होगा. यदि वस्तु सच नहीं है तो उसका सुख दुख का अनुभव भी नहीं होगा. Therefore, you should accept the existence of the knowledge. Let us see some Bhāṣya first. Let us see. So he says what? Prajnanam prajnaptihi shabdadi pratitihi tasyaha sanimitatvam. Shabdadi pratiti. Shabda, sparsha, rupa, rasa, gandha. The pratiti, knowledge of, perceptional knowledge. Nimittam karanam vishaya iti etat sa nimittatvam sa vishayatvam swatma vetirikta vishayata iti etat pratijanimahe. So it is definitely other than me, and sanimittatva, objects are other than me, plus it is sanimittatva, meaning it is becoming the cause in gaining of the particular knowledge. Iti etat. Nahi nirvishaya prajnaptihi shabdadi pratiti syat. Now, nirvishaya, there are no objects, then how can you differentiate knowledge? Knowledge cannot be differentiated if there is no objects outside. Nirvishaya shabdadi pratiti syat. Tasyaha sanimittatvat. Anyatha nirvishayatve shabdasparsha neela pita lohitadi prachaya vaichitrasya dvayasya nashataha nashabhavaha prasajjayata ityartaha. Then there is no Dvaita. See, possibility, the variety, the knowledge of variety also doesn't take place. All Dvayanasha will take place. Duality is destroyed if they really don't exist. Nirvishaya prajnaptihi. Pure knowledge only, no objects are there. Shabdadi pratiti syat tasya sanamitatvat. Anyatha nirvishayatve, there are no objects, then shabdasparsha neela pita lohita totadi prachaya vaichitrasya. There are so many experiences. Shabda, sparsha, rupa, ye loha, ye hai, wo hai. It's different experiences. Dvaya nashataha, on account of the destruction of duality, nashaha, abhavaha, prasajjeta, ityartha. They become abhav, non-existent. So knowledge, you will not have any knowledge of anything. Therefore, nacha prachaya vaichitrasya dvayasya abhavaha asti pratyakshatvat. So, prachaya vaichitrasya dvayasya abhava asti. But actually, dvaita abhava is not taking place because pratyakshatvat. We are practically seeing the objects of the world outside which are pratyaksha, meaning which are
seen by you. Therefore, प्रत्यय वैचित्र्यस्य द्वयस्य दर्शनात् परेषां तंत्रं परतंत्रम इति अन्यशास्त्रम तस्य. So other schools of thought, definitely they say that as per the Anya Shastras, many Shastras speak about that the knowledge is depending on the external objects. Paratantra. The वस्तु ही नहीं है, वस्तु का ज्ञान नहीं होगा. तस्य परतंत्रस्य परतंत्र आश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान व्यतिरिक्तस्य अस्तिता मता अभिप्रेता. So this is our correct conclusion, that they are all depending. तस्य परतंत्रस्य परतंत्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य external objects ज्ञान व्यतिरिक्तस्य अस्तिता मता अभिप्रेता. So this jnanam is knowledge depending upon the presence of the external objects. Therefore, nahi pragnaptehe prakashamatta swarupaya neelapitadi bhāṣya ālambana vaichitriyam antarena swabhava bhedena eva vaichitriyam sambhavati. If simple swabhava, knowledge, shuddha knowledge is there, as an original nature, swabhava, shuddha jnana, only antarangika inside shuddha jnanam is there, that shuddha, the jnana, mere jnana alone, if it is there, it cannot give you the experience of variety. Without the existence of the objects in the world outside, नीला पीता इत्यादि अनुभव नहीं होगा. तो एग्जाम्पल, स्फटिकस्य इव नीलादि उपाधि आश्रयैः विना वैचित्र्यं न घटत इति अभिप्रायः. तो स्फटिकस्य इव नीलादि उपाधि आश्रयैः विना. See, the spatika is there, but without being support or ashraya, upadhi is there, or red, blue, etc., there cannot be any change in the spatika. So the spatika remain as it is. Knowledge cannot take place anything, knowledge of anything. So like a spatika is there, reflects the this one, knowledge also is there, and the objects are there. So that objects are facilitating in gaining the object, the knowledge of that particular object. स्फटिक इज नॉलेज, शुद्ध नॉलेज. उपाधि के पास में एक फल फूल लेके आया, हाइबिस्कस रेड फ्लावर, इट बिकेम रेड. इफ इज शुद्ध ज्ञान इज देयर, शुद्ध ज्ञान में वैरायटी नहीं होगा, वैचित्र्य असंभव. शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध स्फटिक में वैचित्र्य, बट इन शुद्ध ज्ञान दिस ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट, ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिन्ड. So object ही नहीं है, so variety of knowledge is not possible. Now variety in knowledge is taking place, therefore objects are there. This is a bhāṣyarthavādi logic it is. It is, he is putting forth his arguments. So हमारे हिसाब के, हमारे मत के अनुसार, जैसे कार्य कारण संबंध, objects are निमित्त, कारण बन गया, कार्य is knowledge of it. So you cannot deny this. Otherwise you will not understand anything. No objects. शुद्ध ज्ञान में कुछ है ही नहीं. शुद्ध ज्ञान, nothing is there. But Shuddha Jnana, that's what he says, Shuddha Jnana alone will not give you that kind of experience. Nahi pragnaptehe prakāṣamātra swarupāya. Simple prakāṣamātra, only knowledge is illumination. Neela pītādi bhāṣya ālambana vaichitriyam antarena. Mean other than, without, devoid of. Bhāṣya ālambana antarena. Swabhava bhedena eva vaichitriyam na sambhavati. That's meaning. That na sambhavati. स्वभाव वैचित्रेण. Merely knowledge is the स्वभाव. स्वभाव of knowledge में भेद नहीं है. ज्ञान स्वभाव में कोई भेद नहीं है. वस्तु में भेद है, इसलिए वस्तु का ज्ञान हो रहा है. ज्ञान में भेद है.
But jnana mein, otherwise, example is patikasya iva niladi upadhi ashrayaihi vina. Without taking the support of upadhi, ashray ke bina. Upadhi ashray mein, upadhi means here, and spatika is there, pure knowledge. So whatever color you bring, it changes into that color. Similarly, knowledge is pure, patikasya iva. But upadhi is there, that is converting into that knowledge. Vaichitriyam na ghatata ita abhipraya. Otherwise, vaichitriyam, the variety is not possible. So, variety is not possible. Moreover, itascha paratantra ashrayasya bhahyartasya jnana vyatiriktasya astita sankleshanam samklesho dukkham iti artaha. तो इतर शास्त्र में भी इसका स्वीकार किया. बाह्य, he says, he is putting forth his arguments. Shastras have accepted, many Shastras have accepted the existence of the external objects. If that is not accepted, really, Sanklesha also is not possible. Sanklesha means Sanklesha Dukkham ityartaha. देखिए, if real, for example, on cinema screen, you see fire, but that doesn't really burn you. Why? It doesn't exist. It is only not real. So, ऐसा अनुभव होना चाहिए. If the objects are not real, it is only a myth, then the experience cannot be real. Like you see cyclone on screen, but you are not wet. You see the whole thing is burning in the movie, but you are not burning. Like that it should take place. If the objects are unreal, if it is a myth according to you, as per your formula, then how can experience be real? So, Sanklesha also is there. Dukkham iti artaha. Dukkham. So, upalabhyete hi agnyadi. Agni dahadi nimittam dukkham. Agni is there. So, dukkham is there. Agni is mithya. But dukkham is there, no? Pain is there. So, agnyadi bhākyam dahadi nimittam vijñāna vyatiriktam nasyāt tataha dahadi dukkham naupalabhyeta. See, dahadi nimittam vijñāna vyatiriktam nasyāt. If it is vijñāna vyatiriktam nasyāt, if the fire etc. are not actually vijñāna vyatiriktam tataha dehādi dukkham naupalabhyeta. If really speaking, knowledge is different and the objects like the vijñānādi vyatiriktam nasyāt, meaning this agni etc. are not independent of the knowledge. They are really existing. If they are not really existing independent of your knowledge, then what happened? Dahādi dukkham naupalabhyata. Then you would not be suffering from this disease of burning etc. So क्या है? ज्ञान अलग है, वस्तु अलग है. एक ज्ञान when it is illumining the वस्तु का ज्ञान होता है. But you say the knowledge of the वस्तु is mithya. That I cannot accept because अनुभव is real. तुम कहते हो कि जो दिखाई पड़ रहा है वो मिथ्या है, असत्य है. हम कहते हैं if it really असत्य, then the experience would not be real, like burning etc. Sanklesha is there, no? Pain is there, no? No, jnanam ke alawa, what it says that jnana is different and objects are independent of independently, it has its own satta other than knowledge.
सपोज आप यूँ कह सकते हैं, नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट माइट टेक प्लेस, still knowledge can take place if the object is even mithya also, hallucination. You can see something which is not there, and you say, though you are having the knowledge of the particular X which is really not there, hallucination, but that X is may not be in a position to really give you pain because it doesn't exist. But here he says, independent of knowledge, the objects are really existing. हम क्या कहते हैं? Otherwise what we say? If the knowledge of something is taking place, ज्ञान हुआ, इसीलिए वस्तु का अस्तित्व है. वे बोलते हैं ऐसा नहीं है, वस्तु है इसीलिए ज्ञान हो रहा है. That's what his argument is. आप क्या कहते हैं? जो आप देखते हैं आपके मुताबिक वो है. वे कहते हैं ऐसा मत कहो, ज्ञान अलग है, वस्तु अलग है. वस्तु का ज्ञान हुआ, इसका मतलब क्या? वस्तु है इसलिए ज्ञान होता है. Because that jnanam of that particular knowledge of the object is due to the presence of the object. So how can you deny ajativada? How can you say ajativada? How can you deny the world as not existing karke? If it is really not existing, experience would not be real. Upalabhyate tu, but they are available, but they are experienced. Ataha tena manyamahe asti bhahyartha iti. Therefore, we accept that objects of really in the outer world, they are really existing. Nahi vijnana matre sanklesho yukta. Sirf knowledge, main pure knowledge is there. Knowledge of not, pure knowledge. उसमें क्या संक्लेश है? प्योर नॉलेज में, नॉलेज मीन्स नॉलेज नॉट ऑफ, शुद्ध ज्ञान. व्हाट इज शुद्ध ज्ञान? ज्ञान ऑफ नहीं है, शुद्ध ज्ञान है. नॉट नॉलेज ऑफ ब्रह्मन. नॉलेज ऑफ ब्रह्मन भी गलत है से कहना. तो केवल ज्ञान स्वरूप इज डिफरेंट. इसमें इट इज नॉट फंक्शनिंग एज इल्यूमिनिंग समथिंग, द्वैत ही नहीं है. तो शुद्ध ज्ञान में दुख ही नहीं है. बट न विज्ञान मात्रे संक्लेशो युक्तः अन्यत्र अदर्शनाद इति अभिप्रायः. So but everywhere pure knowledge alone, no. Everywhere the knowledge of only is seen and objects are real. Therefore pain is real. You cannot deny. So ये हमारे युक्ति के अनुसार बाह्यार्थवादी says that बाह्यार्थवादी, he says the external objects are real. They are giving you pain. How can you establish अजातिवादा? ये गलत है. देखिए, अब तक समझ में आ गया? आया होगा. अब मैं कहाँ भागे ये मांडुक्य कार्य का पकड़कर? आप सोचते कि अगले महीने खत्म हो जाएगा क्या? अगले महीने खत्म हो जाएगा? नहीं होगा. हाँ होगा. इफ आई चीट यू विदाउट भाष्य आई कैन कंप्लीट इन 1 week. ठीक है. समझना आसान है, समझाना बहुत कठिन है. हमारे लिए तो मज़ा लग रहा है. हाँ पढ़ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, आपको वेरी क्लियर, व्हाट इज इट. आप इसको
समझाना है, बस ब्रह्म उतरेगा ब्रह्मलोक से। ये मुश्किल है। दैट इज वाई sometimes teachers have to spend more time on how to teach. Deducing. So, ये हो गया बात। अभी विज्ञानवादी replies to बाह्यार्थवादी. What is replies? That is next 25th Śloka we see. He is replying now to बाह्यार्थवादी। ठीक है भैया, आपने अपना प्रश्न उठा दिया, अब मेरे जवाब सुनो। क्योंकि आप जैसे मानते हैं जिसको, हम ऐसा नहीं मानते हैं। इसका युक्ति देखो। अब सबका युक्ति सुनाते हैं, आकर में किसकी युक्ति पकड़े? अब पूरा कंफ्यूज हो गया। अब देखिए, ब्रह्मसूत्र में भी जो पूर्व पक्षी कहते हैं कि फटाफट 5-7 पेजेस 8 पेजेस अपना सिद्धांत, आप बीच में डाउट आता है ये कौन किसको बोल रहे हैं, इस पूर्व सिद्धांति का ये व्याख्यान या नहीं तो प्रतिपादितम केन प्रतिपादितम सिद्धांतेन वा या पूर्वपक्षेन वा, ये कौन कह रहे हैं? बिकॉज इट इज सो कन्विंसिंग। व्हेन यू रीड दैट, सो कन्विंसिंग, वंडरफुल वंडरफुल, यस यस यस, 10 पेज पढ़ लिया। आकर में कहीं शंकराचार्य आचार्य कहते हैं एतत् न बोलते ऐसा नहीं है, बस अपना फिर सिद्धांत पढ़ो। अब सिद्धांत का जो सिद्धांति के द्वारा प्रतिपक्ष का के द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत को खंडन करते समय, जब आप सिद्धांति आचार्य अपना प्रतिपादन करते हैं सिद्धांत को, अद्वैत सिद्धांत को, उसमें क्या क्या लोप है, आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किस लिए खंडन किया, उसने क्या कहा, कहाँ कहा, क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। ये साथ साथ में पढ़ना, पढ़ तो लिया, फिर समझना, समझ लिया मगर पकड़ में नहीं आया, हेडेक आ जाता है। कभी कभी लगता है इससे अच्छा बात भगवान का मंदिर में जाके बैठ जाओ। और ये क्या करते ये मांडुक्य क्यों उठा पढ़ा रहे, पागल है। चले प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् इष्यते युक्तिदर्शनात् निमित्तस्य निमित्तत्वम् इष्यते भूतदर्शनात् प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् इष्यते युक्तिदर्शनात् निमित्तस्य निमित्तत्वम् इष्यते भूतदर्शनात्। फिर भाष्य में बाद में प्रवेश करेंगे, इसी को हम फिर पढ़ेंगे ज़्यादा। अत्र उच्यते, यहाँ पर कहते हैं विज्ञानवादी नाउ सेस टू बाह्यार्थवाद। भाष्य में वो कहते हैं, देखिए युक्ति के द्वारा, युक्ति दर्शनात्, देखिए प्रज्ञप्ते है सनिमित्तत्वम् इष्यते युक्ति दर्शनात्। चलो ठीक है, युक्ति के द्वारा, टेकिंग द हेल्प ऑफ युक्ति, कौन किसको कह रहे भाई? विज्ञानवादी बाह्यार्थवादी को कहते हैं। देखो ठीक है बच्चा, आपने युक्ति के सहारा लिया है कि नहीं? क्या युक्ति का सहारा क्या लिया था? युक्ति वैचित्र्यम इज नॉट पॉसिबल इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रियल, पहली युक्ति। दूसरी युक्ति क्या बताया? अनुभव संक्लेश। ये दो मैंने बता दिया आपको, इसलिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि बाह्य पदार्थ सच है। दो युक्ति बता दिया।
अब इसका खंडन करने जा रहे हैं। आपको पता है कब आराम मिलेगा? घर जाके गरम गरम चाय पी लिया ना, तब शांति मिलती है। बाप रे, ये क्या बाह्यार्थवादी विज्ञानवादी, सुबह सुबह परेशान किया। अब ये कहते हैं कि देखिए भैया, टेकिंग युक्ति इनटू कंसिडरेशन, हाँ, यू आर एक्सेप्टिंग दैट विषय ज्ञानम, द नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड, विषय ज्ञान जो है बाह्य विषय ज्ञान एज सकारण, मन निमित्त, युक्ति के सहारा आप लेके सनिमित्त बना दिया उसको। अच्छा, अब देखिए, आप युक्ति के सहारा लेके इसको आप साबित करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहता है कि बाह्य पदार्थ सच है ना? अच्छा, हम भी और किसी का सहारा लेकर साबित करते हैं कि तुम्हारा विचार गलत है। हम किसके सहारा लेते हैं? भूत दर्शनात्। आपने क्या किया? युक्ति दर्शनात्। अच्छा, हम कहते हैं वी टेक द सपोर्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपोर्ट ऑफ ब्रह्मस्थल, ए प्लेस ऑफ इल्यूजरी प्लेस, ब्रह्मस्थल, इल्यूजरी प्लेसेस, एंड वी कंक्लूड, ब्रह्मस्थल में we conclude that the variety in knowledge, देखिए, variety in knowledge, वैचित्र्यता and pain, संक्लेश। आपने क्या युक्ति, क्या सहारा लिया? दोनों का सहारा लिया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको। विचित्र्यता, वैचित्र्यता एंड संक्लेश, ये युक्ति हो गई आपके लिए। इसी के द्वारा, ये दो युक्ति के द्वारा आप बाह्य वस्तु सच है ऐसा बता दिया है कि नहीं? अब हम कह रहे हैं क्या है? एग्जाम्पल ब्रह्मस्थल, इल्यूजरी प्लेसेस के द्वारा उसका मन में रखते हुए हम कहते हैं दैट वैचित्र्यता और संक्लेश, दीज टू आर नॉट द कॉजेस, निमित्त इन द नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आप इन दोनों को निमित्त बना दिया, निमित्त बनाकर बता दिया कि ये ज्ञान, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ये क्या निमित्त है। अदरवाइज वैचित्र्यता डजंट टेक प्लेस, अनुभव विल नॉट टेक प्लेस, संक्लेश विल नॉट बी देयर, देयरफॉर नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर में ये ऑब्जेक्ट्स एंड ये निमित्त बन गया, सकारण बन गया। जिसको लेकर, जिसकी सहायता, मैंने जिन दोनों को लेकर आपने कह दिया कि इन दोनों के कारण हम कहते हैं कि बाह्य वस्तु सच है, और ज्ञान में विचित्रता, वैचित्र जो है, अलग अलग प्रकार के ज्ञान, इसका कारण, मूल कारण बाह्य पदार्थ ही है। ऐसा आप इन दोनों जो युक्ति को लेकर के आपने साबित किया, हम ये हमारे मत के सिद्धांत के अनुसार ये दोनों को, माने वैचित्रता और संक्लेश को, हम निमित्त के रूप में स्वीकार नहीं करते। आप स्वीकार किया, हम नहीं स्वीकार करते। ठीक है, माने जिन बाह्य विषयों को आपने क्या किया? ज्ञान वैचित्र्य और संक्लेश, इनमें निमित्त कह रहे हो, जो आप निमित्त कह रहे हैं, हाँ? उन वैचित्रता और क्लेश में हमारे हिसाब से वो हेतु नहीं है, वो ज्ञान हेतु नहीं बनता, माने वो निमित्त, हमारा निमित्त अलग है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। अब देखिए, आपने कहा पट और घट में अंतर होना चाहिए, है ना? पट अलग है, घट अलग है, इसीलिए पट ज्ञान और घट ज्ञान हो रहा है। इसीलिए पट ज्ञान घट ज्ञान से अलग है, घट ज्ञान पट ज्ञान से अलग है। You said there is difference between pata and ghata. अच्छा, so pata and ghata outside, and they say, you say that pata है, घट है, पट घट से अलग है, घट
पट से अलग है, नॉट कंफ्यूज ना पट घट प्रयोग। इसीलिए एक दूसरे से अलग है, वो वास्तव है, एक दूसरे से अलग है, इसीलिए पट ज्ञान घट ज्ञान हो रहा है, इसीलिए पट ज्ञान घट ज्ञान से अलग है, घट ज्ञान पट ज्ञान से अलग है ना? आप ऐसा कहते हैं। अच्छा, दिस इज योर युक्ति, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपकी युक्ति हुई, अनुभव नहीं हुआ। युक्ति अलग है, अनुभव अलग है। आप युक्ति दिखा दिया इन दोनों को साबित करने के लिए, और अनुभव तो अलग है बेटा। तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे युक्ति को सामना करने के लिए हम भी हमारा युक्ति प्रयोग करेंगे। हमारे युक्ति के द्वारा, आपकी जो युक्ति के द्वारा आप जो बताया उसको खंडन करते हैं, हम भी युक्ति का ही प्रयोग करते हैं। एक तो आपका युक्ति दर्शनात्, हमारा भूत दर्शनात्। इस पर हम करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।